हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय संडे वीडियोस। आज का वीडियो हमारा दो पार्ट्स में होने वाला है। इफ़ यू लाइक द वीडियो, गिव अ थम्स अप, डू सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड जॉइन अ फैमिली। Why do you need a 35mm lens? Reason number 1, 35mm lens is more familiar to you. आप अगर एक प्राइम लेंस सेक्शन में जाओगे ना तो आपको ऑप्शंस क्या मिलते हैं, 50mm एंड 35mm। बट व्हेन यू गो फॉर 35mm आपको एक वाइडर एंगल मिलता है, डेप्थ ऑफ फील्ड ज़्यादा होता है, दे आर कॉस्टलियर बट यू कैन गेट गुड रिजल्ट, सो दे आर फेमिलियर टू यू एंड यू कैन यूज देम एज अ 50mm लेंस ओनली, बिकॉज 35mm 50mm में आपको डिफरेंस रहेगा, इट इज़ अ वाइड लेंस देन 50mm लेंस। नेक्स्ट रीज़न इज दे आर कॉम्पैक्ट। 50mm लेंस जैसा छोटा होता है वैसा 35mm लेंस भी बहुत छोटा होता है, easy to carry, good for your photos and you can click good pictures with it. Next, they are versatile in nature, versatile to use, easy to carry, easy to use. तो इसके लिए आपको 35mm की बहुत ज़रूरत पड़ती है। Next, they have a bigger aperture. You have a bigger aperture in 35mm like 1.2, 1.4, 1.8 and उसके बाद आपको वाइड भी मिलता है, वाइड, so you can get a good and clear picture. And finally, they are a bridge between a wide lens and a standard lens. अगर आपके पास बहुत ही वाइड लेंस नहीं है और आपका स्टैंडर्ड लेंस तो होता ही है, बट टू फिल इन द गैप, टू फिल इन योर पिक्चर, टू फिल इन योर मोटो, you need a 35mm lens. So this was my small video on why do you need a 35mm lens in your kit bag. 35mm lens की क्यों ज़रूरत है? So if you like this video, give a thumbs up and stay tuned to our channel, subscribe to our family and join our family. Thank you so much.